everyone, this is me Gurukul and welcome to our YouTube channel at Gurukul International. As I have promised you earlier that I'll be giving or sharing lots of tips and strategies about IELTS, PT, CELTIP and other so many language proficiency exams. So yes, as promised, today I am here to share some basics about IELTS, and this video is especially for those students who wish to do IELTS for the very first attempt. So I will let you know what IELTS is, what type of IELTS examinations are there, and what is the difference between them. So come on, let's get started. Okay, first of all, IELTS. IELTS is just an abbreviation word. The full form of IELTS is International English Language Testing System. IELTS is a language proficiency exam which enables you to migrate to different countries for your study or for your immigration purposes. Now, if you are interested to go abroad for higher education, you will sit for the IELTS exam, but specifically for IELTS academic exam, which is mainly for the students appearing and willing to apply for study visa. On the other hand, for those candidates who wish to migrate abroad for PR purposes or for work purpose, they have to sit for IELTS general training. So this is specifically for PR, that is permanent residency, or for work. Now, different countries have their own different requirements for the scores, for the band scores in IELTS. And IELTS is usually scored out of 9 bands. The requirement for the band score differs depending on what your purpose is for IELTS. If you're a student and want to migrate overseas for study visas or for study purposes, then you need to sit for academic, and the minimum requirement, which usually the good colleges and universities demand, is if you are a student after your +2, you need to get at least 6 each. That means that there are 4 different modules which I will discuss further in the class. But yes, each module, यानी कि आपको यहाँ IELTS में 4 basic modules आते हैं. There are 4 basic modules: reading, writing, listening and speaking. And for each of the module, you should score minimum of 6 band scores. Now, there are some universities which demand a higher score of 7 each. And this is specifically for the students who wish to study their masters. So this is the score requirement for the students. Now coming to general training. For work purposes, according to your work category, you have the score requirements, which are usually mentioned in the websites where the requirements for the PR are mentioned. But generally अगर मैं बताऊँ तो work वालों के लिए जो normal categories होती हैं, उनमें आपको minimum 5 to 5.5 बैंड का each requirement रहता है. There are few categories. अगर आपने PR के लिए अप्लाई करना है तो कुछ categories ऐसे हैं जैसे कि the drivers, the chef, the cooks, right? उनको भी इसी requirement के साथ जाना होता है. लेकिन there are few categories जिसमें जैसे अगर कोई engineering basis पे जा रहा है, somebody is an IT professional, so उनका requirement बढ़ जाता है. That is, they need minimum of 7 band score, especially in reading, writing and speaking module. While
they need 8 at least in the listening module. So ये थे मिनिमम बैंड स्कोर रिक्वायरमेंट्स जो आपको चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा, राइट? सो आपका टारगेट, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने +2 किया है, आपने ग्रेजुएशन भी किया है, लेकिन आप किसी डिप्लोमास के लिए जाना चाह रहे हैं, एंड मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जो हैं वो 6 ईच की रिक्वायरमेंट के साथ चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज भी हैं जो, जैसे हम कहते हैं ना, द गुड यूनिवर्सिटीज, द हाई क्लास यूनिवर्सिटीज, तो वो फॉर द स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए उनकी रिक्वायरमेंट 7 की भी होती है। एंड अगर आप पीआर के कैंडिडेट हैं, पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यूजुअली 777-8 कनाडा के लिए मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ऑस्ट्रेलिया में कई कैटेगरीज में 8 ईच का रिक्वायरमेंट भी है, सो दैट डिपेंड्स, राइट? बट पीआर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो होगी 7 in reading, writing and speaking module and at least of 8 in the listening. वर्क कैटेगरी में डिपेंड करता है, आप स्किल्ड कैटेगरी में जा रहे हैं या अनस्किल्ड कैटेगरी में जा रहे हैं, जो भी आपकी कैटेगरीज हैं वो आप वहाँ एम्बेसी की वेबसाइट पे, कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, एंड अकॉर्डिंगली आपका रिक्वायरमेंट मिनिमम 5.5 बैंड से शुरू हो जाता है, एंड इट मे राइज अप अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एकेडमिक और जीटी के डिफरेंस के बारे में। इफ आई टॉक अबाउट द मॉड्यूल्स, तो ऑफ कोर्स आईएलटीएस ही नहीं, मैक्सिमम हर एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम में 4 मॉड्यूल्स हैं जो कवर होते हैं। द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल इज योर लिसनिंग, देन रीडिंग, writing and speaking. Listening, reading, writing, and of course, speaking. तो चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो जनरल ट्रेनिंग है, यही 4 मॉड्यूल्स कवर होंगे। लेकिन डिफरेंस क्या आता है? एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग में लिसनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दे बोथ आर सेम। You will have, whether you are a GT candidate or academic candidate, you will have the same listening and you will sit in the same hall and will attend the same listening, all of you. But if you are a GT candidate, then of course आपकी readings में differentiation आ जाता है।